Hello children, how are you all? I hope you are happy and healthy. Children, this is your general knowledge video class and we are on page number 36. This is your general knowledge book, that is Knows for Sure. General knowledge for class 2. Okay children? So we have completed in our previous video and in our previous online class shapes and patterns. Okay, shapes and patterns we have discussed. There are so many shapes and patterns as we have already seen in mathematics also. So that we have completed. We have completed what is the symbol of addition, what is the shape of a star, and triangle shape, rectangular shape, different type of the shapes we have discussed in our previous video. Cuboid, cylindrical shape, everything we have discussed in our previous class. So children, today's topic is totally different. Okay, so first we will write date. So what is the date today? This is Friday and this is your GK class, and here the date is 2nd July 2021 and this is your GK class, general knowledge class. Okay, now our chapter, or you can say page number 36, just take out your book and turn over the page number 36, useful plants. Okay, useful plants. So what do you mean by useful? Useful means which are beneficial for us, which are good for us. That is called useful. We can use it, है ना? जैसे कि जो यूज़फुल प्लांट्स होते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, और उनसे बहुत प्लांट्स तो वैसे भी आपको पता है कि कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ because it is written useful, that is why I am telling you which are good for you. Plants, why they are useful? Because they are giving us grains. Grains, what do you mean by grains? Grains mean अनाज. अनाज देते हैं. प्लांट से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है ना? इसीलिए तो वो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए. तो ये हमें अनाज देते हैं. जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ है और राइस है, और आपको बहुत सारे ग्रेन जो सेरेल्स वगैरह आप खाते हो अपने डेली फूड में, वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट्स. नाउ एंड प्लांट्स आर यूज्ड टू गिव फ्रूट्स ऑल्सो. ओके, फ्रूट्स भी देते हैं वो हमें. फ्रूट्स देते हैं ना, प्लांट से ही हमको एप्पल मिलता है, मैंगो मिलता है, और सारी चीज़ें हमको किससे मिलती है? प्लांट से मिलती हैं. सो दे आर ऑल, वाई वी आर कॉल्ड यूजफुल प्लांट्स? बिकॉज दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ थिंग. नाउ एंड प्लांट्स विल गिव अस वेजिटेबल्स ऑल्सो. ओके, वेजिटेबल्स, प्लांट से ही हमें वेजिटेबल्स मिलती है. तो प्लांट्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स आर, यू कैन इंक्लूड इन दिस टर्म प्लांट्स मैनी शर्ब्स, मैनी क्रिपर्स, बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर आ जाती हैं. सिर्फ यही नहीं कि एक पेड़ है, नहीं, पेड़ के अलावा जो शर्ब्स होती हैं और जो क्रिपर्स होते हैं, everything will come in this criteria, that is called plants. Okay children, so now today's topic is useful plants, and today we are going to discuss about coconut and neem tree.
ओके, कोकोनट सब खाते हैं, अच्छा लगता है। हम लोग टेम्पल में चढ़ाते हैं, कोकोनट चढ़ाते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड एंड वी आर using in many times in our life. बहुत सारे टाइम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में. और नीम ट्री, we are going to discuss about neem tree also. So children, first we will discuss how many species we can find these useful plant. ये useful plant की कितनी species हमें पूरे जो वर्ल्ड में मिल जाती है, तो वो है स्पेशीज़ हमारी कितनी है 3,20,000. ओके, सो 3,20,000 स्पेशीज़ हैं. समझ जाइए ये कितने बड़े रेंज में हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, है ना. प्लांट्स तो अभी आपकी बुक में तो बहुत कम प्लांट दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली प्लांट्स की स्पेशीज़ जो होती हैं, जो वैरायटी होती है, इट्स हैविंग 3,20,000. यू जस्ट कांट बिलीव दिस, है ना. तो अभी हमें बहुत पढ़ना है, बट अभी हम सिर्फ 2 प्लांट के बारे में बात करेंगे. आई विल शो यू पिक्चर ऑल्सो and one video on that plant, what are plants, how can we grow this. So these type of the things we will discuss in the class. And first we will discuss coconut plant or coconut tree. So I'll show you picture of coconut plant and its leaves and its fruit also. And after that we will discuss neem tree. neem tree का मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी. पिक्चर के अंदर आपको फिर दिखाई देंगी लीव्स की, बिकॉज दिस इज़ अ मेडिकेटेड प्लांट, वेरी यूजफुल प्लांट फॉर अस. सो दैट इज़ वाई आई विल शो बाय द पिक्चर. पिक्चर आपको दिखा के पढ़ाने में ज़्यादा आपको समझ में आएगा. दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस पिक्चर. ओके, सो स्पेशीज़ प्लांट्स की कितनी होती हैं, लर्न इट. 3,20,000. ओके, 3,20,000 स्पेशीज़ हैं, यानी वैराइटीज़ हैं. तो इसको आप प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिए. प्लांट्स की स्पेशीज़ कितनी होती हैं, 3,20,000. ओके, एंड प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और हमें क्या देते हैं प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है ना. हम ऑक्सीजन मिलता है तो हम उससे क्या करते हैं, हमारा जीवन उससे चलता है. और इधर पेंडेमिक में तो कितना क्राइसिस था. यू हैव सीन, यू हैव गॉन थ्रू दिस पेंडेमिक दैट वी जस्ट इन स्कैंटी ऑफ ऑक्सीजन. वाई? बिकॉज दिस कोरोना हैज़ गिवन अस लेसन दैट वी शुड प्लांट ट्री. हमें बहुत ज़्यादा प्लांट को लगाना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट इससे साफ़ हो जाए, है ना. प्लांट हमारा एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है. कैसे क्लीन करता है? इन डे दे आर गिविंग अस ऑक्सीजन एंड इन नाइट इट्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो एज दिस इज़ द पार्ट ऑफ EVS, but I am telling you that by photosynthesis you can get these things. So children, today we are going to discuss about coconut tree. So coconut tree सबने देखा होगा, सबने कोकोनट खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, है ना. तो ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे घरों में. कोकोनट हम चटनी भी बनाते हैं. वी आर मेकिंग लॉट ऑफ थिंग विथ कोकोनट. वी आर यूजिंग दिस ड्राई कोकोनट in our halwas and in our desserts, whatever we are eating. So coconut are very useful for us, and it's water which you can find inside that shell. That liquid is called coconut water. So coconut water is also very useful for the health. So these are the things which nature gives us, जो हमें nature देता है. और ये सारी plantation, vegetations, they are very very useful for everyone.
not for human being but the animals and uh, birds. They are making their nest on the plants or trees, and their leaves and stems are eatable for the animals also. So they are giving us lot of benefit. So that is why we call this useful plants. And after that we will discuss neem tree. Okay, today's class we are going to discuss about neem tree also. So neem tree is very much medicated plant, you can say. Medicated plant होता है, और इस plant से आपको सब कुछ मिलेगा. इसकी even इसके leaves, इसका fruit और इसके stem में लगे इसकी सारी चीज़ें, और जो इसका trunk होता है, trunk के ऊपर जो bark होता है, that is also very useful. एंड दिस इन करोना टाइम इस पे एक तरह का एक स्टेम सा लटकता है पतला पतला, और वो कहलाता है गिलोई, नीम गिलोई जिसको बोलते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस. एंड नीम is a medicated plant, as you all know. From this plant's leaves and its fruits we are making medicine, है ना. So we will discuss today only two plants. First is coconut plant and second is neem tree. Okay, so first I'm going to show you a short video about plants. Okay children, so let's see this video first. I am showing you image of coconut plant. Here you can see coconut plant. Okay, now I am going to tell about coconut plant. Coconut palm of the family, cultivated extensively in tropical areas for its edible fruits, the coconut. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में कल्टीवेट किया जाता है. Or you can say coconut palms are found on tropical coastal areas nearly worldwide and probably originated somewhere in Indo-Malaya. They are the most economically important palm species, coconuts being one of the predominant crops of the tropics. Now children, here you can see this is coconut plant, and you can see it is stem and its leaves. Okay, so here this plant especially you can find at tropical or subtropical regions, and it is only and only best, they are the most economical important palm species. It is coming from the you can say ये एक palm family का एक part होता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा economical important palm species है, क्योंकि इसका हर एक पार्ट यूज़ होता है. इस पेड़ का हर एक पार्ट इस्तेमाल किया जाता है. कोकोनट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग. So that is why each and every part of the plant will use. Okay, so here we will see in description. So physical description, if we are going to tell you, so the slender and leaning ring trunk of the coconut palm rises to a height of up to 25 meter. You can see over here children. Yes, 25 meters, it means 80 feet for a solid base, and it's surmounted by the graceful crown of the giant feather-like leaves. Here you can see slender type of trunk, and it's you can see a few this
crown of the giant feather-like leaves. Okay. Now mature fruits ovoid or ellipsoid in shape, 300 to 400 mm in length and 150 to 200 mm in diameter. Have a thick fibrous husk surrounding the familiar single-seeded nut of the commerce. Now here you can see, I'll show you one more photo or pic of this plant and its plant's fruit also, which is called coconut. Okay. Now children, here you can see each plant having lots of coconuts. So the coconuts have a thick fibrous husk surrounding the familiar single-seeded nut of commerce. A hard shell encloses the insignificant embryo with its abundant endosperm, composed of both meat and liquid. Okay. Coconut fruit float readily and have been dispersed widely by oceans current and by human throughout the tropics. Okay children, here you can see these are the coconuts which are hang on coconut tree. Okay. Now if we will talk about this plant's cultivation, so coconut palms flourish best close to the sea on low-lying areas a few feet above high water where there is a circulating groundwater and ample rainfall. इट मीन्स कोकोनट जो पाम होता है वो फ्लरिश होता है सी की लो लाइन एरियाज़ में, यानी नियर द सी ये लो लाइन एरियाज़ में फ्लरिश होता है. और एरियाज़ ऑफ फ्यू फीट हाई वाटर वेयर देयर इज़ अ सर्कुलेटेड ग्राउंड वाटर और एम्पल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, दैट इज़ वाई वहीं पे ज़्यादा आपको मिलेगा. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोनट आर प्रोड्यूस ऑन स्मॉल नेटिव प्लांटेशन. सो propagation is by the unhusked ripe nuts. They are laid on their sides close together and nursery beds and almost covered with soil. Now here you can see this is a fruit of coconut, and I will show you few more picture of coconut fruit. Okay. And children, here you can see a coconut shell have a thick fibrous husk surrounding the familiar single-seeded nut of commerce. A hard shell encloses the insignificant embryo with its abundant endosperm, so composed of both meat and liquid. So here you can see this is the hard shell of coconut. ये पका हुआ नारियल है जो कि पूरी तरह से ड्राई होके हो जाता है. इसके अंदर यू कैन फाइंड फ्लूइड, इसके अंदर पानी पाया जाता है, विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग. ओके. Now here coconut flesh is high in fat and can be dried or eaten fresh. The liquid of green nut, commonly known as coconut water, जो इसके अंदर का पानी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक वाटर, एक लिक्विड पाया जाता है और वो कहलाता है कोकोनट वाटर. ओके. सो इट इज़ you can say the commonly known as coconut water can be consumed fresh and is used in beverages. The harvested coconut also yield copra, the dried extracted kernel or meat from which coconut oil, a major vegetable oil, is expressed. Now here children you can see in this
after you just removing this shell, you can find coconut water. And when we are uh, going to see this one, so here you can see this is a hard shell, and from here, after grinding this hard shell or this white area, so we will get oil also from there. तो ये एडिबल ऑयल्स होते हैं और इनको खाया जा सकता है और इसको लगाते हैं बहुत सारे लोग. So although the coconut finds in greatest commercial utilization in the industrial countries of the Western world, its usefulness and its native areas of cultures are even greater. Okay, so इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका वेजिटेशन होता है. And you can say it is a very useful plant for human being, and its leaf to fruit and its stem, everything are used for human being are using for their uh, now children, here I am showing you neem plant as rat, and you can see it's having green leaves, commonly known as neem tree or Indian lilac. Is a tree that mahogany family Meliaceae. It is one of the two species in the genus Adiranticata and is native to the Indian subcontinent and most of the countries in Africa. It is typically grown in tropical and semi-tropical regions. Neem trees also grow on an island in southern Iran. Its fruits and seeds are the source of neem oil. So children, here you can see neem plant, which is very useful for human being because its leaves, its fruit, its stem is very useful. It is used in medicine, and here you can see neem is a fast growing tree that can reach a height of 15 to 20 meters. 15 से 20 मीटर तक लंबा हो जाता है ये, and rarely 35 to 40 मीटर ये पाया जाता है. It is deciduous, shedding many of the leaves during the dry winter month. The branches are wide and spreading. The fairy dense crown is roundish and may reach the diameter of 20 to 25 meter. The neem tree is very similar in appearance to its relative, the chinnaberry. Okay. Here you can see this is neem tree and it is very it's having a dense leaves and its branches are बहुत ज़्यादा इसमें branches होती हैं, and white and fragrant flowers are arranged in more or less dropping auxiliary penicils which are up to 25 centimeter long. Okay, it's having a, and the fruit is smooth. इसका fruit क्या होता है, वो smooth होता है, olive like drupe which varies its shape from the elongate oval to nearly roundish. इसका थोड़ा सा yellowish shape करके इसको नीम कौड़ी भी बोलते हैं. जो उसका फ्रूट होता है उसको नीम कौड़ी भी बोलते हैं, है ना. और ये बहुत ही अच्छा होता है. और द फ्रूट स्किन इज थिन एंड द बिटर स्वीट पल्प, इसका थोड़ा सा कड़वा सा स्वाद होता है. इज़ अ येलोइश वाइट एंड वेरी फाइब्रस. ओके, नाउ दीज आर द जो इसका फ्रूट होता है वो ये होता है. और अब हम देखते हैं इसकी लीव्स के बारे में. इसकी लीव्स कैसे होती है. इसकी लीव्स बहुत ही ग्रीन होती है और लंबी होती है और बहुत ही सुंदर सा इसका जो अपीयरेंस होता है
वो होता है, आप देख सकते हैं इसमें। नीम एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा ट्री है, द बार्क, लीव्स एंड सीड्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन. It is, you can say, it's a medicated plant. Less frequently root, flower and fruit are also used. Neem leaf is used for leprosy. These are the neem leaves I am showing you. So this is used for leprosy. Leprosy एक तरह का disease है जिसके लिए ये इस्तेमाल होता है. Eye disorders, bloody nose, intestinal worms, stomach upset, loss of appetite, skin ulcers, disease of the heart and blood vessels, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फीवर के लिए, डायबिटीज़ के लिए एंड गम डिजीज़ के लिए, जिंजिविटिस के लिए एंड लीवर प्रॉब्लम जितनी भी होती है उससे ये लीव्स इसकी बहुत इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रहता है, बहुत वेरी यूजफुल फॉर. द लीफ इज़ ऑल्सो यूज फॉर बर्थ कंट्रोल and to cause of the abortions also. So these leaves are very useful and the bark is used for malaria. जो इसके bark होते हैं, it means जो उनके stem में जो उसका trunk होता है उसमें जो bark होता है वो इस्तेमाल होता है for malaria. मलेरिया भी एक तरह का इन्फेक्शन है जो आपको पता ही है कि किस चीज़ से होता है. स्टमक एंड इंटेस्टिनल अल्सर, स्किन डिजीज़, पेन एंड फीवर के लिए इसका बार्क का इस्तेमाल होता है. द फ्लावर इज़ यूज फॉर रिड्यूसिंग बाइल, कंट्रोलिंग फेगम एंड ट्रीटिंग इंटेस्टिनल वर्म्स. तो इसका जो फ्लावर होता है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. और द फ्रूट इज़ यूज फॉर hemorrhoids or intestinal worms, urinary tract disorders, bloody nose, phlegm, eye disorders, diabetes, wounds and leprosy. इतनी सारी चीज़ों के लिए इसके जो फ्रूट होता है जिसको अभी हमने बताया इसको नीम कौड़ी भी बोलते हैं वो इस्तेमाल होता है. नीम twigs are used for cough, asthma, hemorrhoids, intestinal worms, low sperm levels, urinary disorders and diabetes. People in tropics sometimes chew neem twigs instead of using toothbrushes. Toothbrushes अगर जो इस्तेमाल नहीं करते हैं सब ट्रॉपिकल में वो नीम लीव्स को च्यू कर लेते हैं, चबाते हैं और चबाने के बाद उनको उनका माउथ जो होता है वो फ्रेश हो जाता है और जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं उससे, क्योंकि ये वॉश करता है अंदर के माउथ को. बट दिस कैन कॉज इलनेस. नीम ट्विग्स आर ऑफन कंटेमिनेटेड विथ फंगी. बट ये जो हैबिट है कुछ लोगों की कि वो उसको च्यू करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है. And neem twigs are often contaminated with fungi within 2 weeks of harvest and should be avoided. So the seeds and the seed soil are also used for leprosy and terrestrial worms. They are also used for birth control and to cause abortion. The stem, rock, bark and fruit are used as a tonic and astringent. Okay, some people apply neem directly to the skin to treat head lice, skin diseases, wounds and skin ulcer as a mosquito repellent, as a skin softener. तो नीम की जो लीव्स हैं वो डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे बहुत सारी स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती हैं और बहुत सारी जो वुंड्स होते हैं, स्किन अल्सर्स होते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट होता है एंड स्किन सॉफ्टनर का भी इस्तेमाल करता है ये. इनसाइड एंड दिस इज नीम इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड मतलब जो कि आप कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इनसे बना सकते हैं नीम से. जैसे हम लोग नीम की पत्ती कभी कभी जला देते हैं, इसके लीव्स कुछ बर्न करते हैं ताकि मॉस्किटो बाइट ना हो. तो ये बहुत ही मेडिकेटेड प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है. And nowadays when we are facing this pandemic, so here you can find on the tree
if you will get गिलोय की वो लंबी लंबी जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अगर नीम पे लगी हों, नीम के प्लांट पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं. तो अगर आप ओवरऑल देखें तो नीम ट्री इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग. So children, today we have discussed these two trees. So first we have discussed coconut and second we have discussed neem tree. Okay children.